અમને ટાટા કન્સલ્ટેશન સર્વિસીસની ટ્રેનિંગ તરફથી CSR કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીની એક્ટિવિટી આપી છે, જેમાં અમારો ફ્રી એજ્યુકેશન ટોપિક છે. તો હું તમને પૂછવા માંગીશ કે તમને આપણા શિક્ષણ પદ્ધતિમાં શું ફેરફાર કરવા જરૂરી લાગે છે? મારા મત અનુસાર હાલની શિક્ષણ પદ્ધતિમાં ઘણા ખરા ફેરફારો કરવાની જરૂર છે. અત્યારના આધુનિક યુગમાં વિદ્યાર્થીઓની અભિરુચિને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ, એની વિષય પ્રત્યેની અભિરુચિને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ, રમત ગમત, ટેકનોલોજી એ બધાનું શિક્ષણ આપવું જોઈએ. વિદ્યાર્થી પુસ્તકીય કીડો ન રહેતા તેને સામાન્યથી સામાન્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એ પ્રમાણે શિક્ષણ પદ્ધતિ અમલમાં લાવવી જોઈએ. ભાર વિનાના ભણતરને ધ્યાનમાં રાખીને વિદ્યાર્થી ઓછામાં ઓછા પુસ્તકથી સારું એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે એ પ્રમાણે આપણે એને શિક્ષણ આપવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓની ભાવના અને લાગણીઓને પણ એટલું જ મહત્ત્વ આપવું જોઈએ. જો આપણે એમની ભાવના અને અભિરુચિને મહત્ત્વ આપીએ તો શિક્ષણનો પાયો વધુ મજબૂત બનાવી શકીએ એવો મારો મત છે. તમે વિદ્યાર્થીઓના પરિવારને અનુલક્ષીને શું કહેવા માંગો છો? આજના વિદ્યાર્થી પર તેના પરિવારજનોની પણ અનેક ગણી અપેક્ષાઓ સંકળાયેલી હોય છે, જેથી વિદ્યાર્થી એ બાબતમાં પણ પાછળ ન પડે અને પોતાના કદમ આગળ ધપાવતો જાય એ પ્રમાણે આપણે શિક્ષણ પદ્ધતિને અમલમાં મૂકવી જોઈએ. મારા મતે વિદ્યાર્થી, શિક્ષણ પદ્ધતિ અને શિક્ષક કઈ રીતે સંકળાયેલો છે? પ્રેરણા પૂરી પાડતો શિક્ષક ખરા અર્થમાં વિદ્યાર્થીઓનો પથદર્શક બની રહે છે. વિદ્યાર્થીઓ ભણાવનાર શિક્ષક કરતાં પ્રેરણા આપનાર શિક્ષકને વધુ યાદ રાખે છે. આથી વિદ્યાર્થીને પ્રેમ અને પ્રેરણા આપીને ભણાવીને તેના જીવનના પાયાનું સાચી રીતે ઘડતર આપણે કરવું જોઈએ એવું મારું માનવું છે. શિક્ષક અને શિક્ષણ એ તો ખળખળ વહેતી નદી જેવા હોવા જોઈએ. આ બંનેનો સમન્વય થાય ત્યારે ખરા અર્થમાં વિદ્યાર્થીના ભણતરના અને ભવિષ્યના પાયા મંડાય છે. અંતે એટલું જ કહીશ કે ભય મુક્ત અને સ્પર્ધા મુક્ત કરાવે એ જ સાચી કેળવણી અને એ જ સાચું શિક્ષણ છે. તમે તમારો સમય આપ્યો એ માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે લોકોએ મારો અભિપ્રાય લીધો એ માટે તમારો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. नमस्ते सर. सर हमें TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की ट्रेनिंग की तरफ से CSR की एक्टिविटी मिली है, कॉरपोरेट सोशल एक्टिविटी में अपना योगदान देने का मौका मिला है, जिसमें हमारा टॉपिक है फ्री एजुकेशन. तो सर हम आपकी क्या राय है ये जानना चाहते हैं. एजुकेशन जो शब्द है ना, इसका अर्थ ये होता है टू ब्रिंग आउट. जो भी है, जो सद्गुण तुम्हारे में है उसे बाहर लाने की प्रक्रिया, उसका नाम शिक्षण. और जो जहाँ जहाँ लोकशाही है वहाँ शिक्षण महत्व रखता है, क्योंकि पूरा आधार इन पर ही है. तो फ्री एजुकेशन राष्ट्र में होना चाहिए. जन्मजात अधिकार है इनका. आदमी जन्म लेता है और जन्म से जो अधिकार मिलते हैं उनमें एक अधिकार यह है कि शिक्षण पाना. और जितने लोग शिक्षित होंगे इतने ज़्यादा संगठित होंगे, और ज़्यादा संगठित होंगे तो वो जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सामना अच्छी तरह से कर सकते. पूछना चाहती हूँ कि आपको हमारी एजुकेशन सिस्टम में किस चीज़ की कमी लगती है? एजुकेशन में क्या सिस्टम है ये अलग बात है. आप में जो भी है व्यक्ति की गुणवत्ता का प्रकटीकरण, उसका नाम शिक्षा है. और ये विधान जो मैं कर रहा हूँ ना, वो स्वामी विवेकानंद जी का है. तो अभी जो शिक्षण है ना, इट कल्टिवेट्स ओनली मेमोरी. सत्य के बारे में आपने पूछा, तो एजुकेशन मेमोरी को कल्टिवेट करने की प्रक्रिया बन गई. और ज़्यादातर लोगों का दृष्टिकोण वही रहता है कि अच्छी नौकरी मिले, अच्छी सर्विस मिल जाए, अच्छी आमदनी तुम कमा सको और अपने जीवन को आर्थिक ढंग से समृद्ध बना सको, ऐसा उद्देश्य रहा है का. ये बात नहीं, इसमें चारित्र की बात बोल गए. तो चारित्र प्रधान शिक्षण होना चाहिए. सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी
चारित्र का निर्माण करे, ऐसा शिक्षण वो तो और अच्छा है। सर, आप पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स तथा गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवकों के सामने जब भी बोलना होता है तब हम सिर्फ 2 बातें कहते हैं इन्हें कि अच्छे से अच्छी तंदुरुस्ती होनी चाहिए। युवकों के लिए एक संदेश, क्योंकि शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम। तुम नेता बनना चाहते हो, अभिनेता बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, या कलाकार बनना चाहते हो, या विद्वान प्रोफेसर, जो भी बनना चाहते हो, माध्यम शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो युवाओं को एक ही उद्देश्य, पहले स्वास्थ्य रक्षा करना, स्वास्थ्य प्राप्त करना। लोकमान्य तिलक ने 1 साल कॉलेज का शिक्षण जाने दिया था और व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाया था। दूसरी बात, अच्छे से अच्छा एजुकेशन। तो एजुकेशन ये मैंने व्याख्या की ना, वो तो पाश्चात्य है, मगर हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी, और हमने बहुत अच्छी व्याख्या इनकी निकाली एक ही वाक्य में, स्वा विद्या या विमुक्त है। जो मुक्ति तुम्हें दिलाए उसका नाम विद्या है। अभी कॉलेज में आप पढ़ते हैं ना, वो 4 दीवारों का शिक्षण अलग है और वास्तविक जीवन जब शुरू होता है यह भी अलग है। तो उसमें संघर्ष आएंगे ही। इसमें अनेक प्रकार की यातना, दुख, व्यथा, प्रिय का वियोग होगा, अप्रिय का योग होगा, मृत्यु होगा, व्याधि होगी। ये तो जन्मजात दुख गिने भगवान बुद्ध ने, जन्म, जरा, व्याधि, प्रिय का वियोग, अप्रिय का योग और मृत्यु। तो ये संघर्ष जब आएंगे, उसके सामने अगर तुम्हें मुक्ति दिलाए तो वो विद्या सच्ची, वरना इन्फॉर्मेशन ओनली, तुमने यहीं से ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। ये विद्यार्थियों के लिए, वालियों के लिए। अब वालियों के लिए बात यह है कि उसे संस्कार धन जो खुद प्राप्त किया हो, अनुभव के जरिए, संस्कार के जरिए, अपने परिवार की सद्गुण की परंपराओं के जरिए वो अपने संतानों में आए, वो अपने संतानों में उस संस्कारों का सिंचन हो, ऐसी फर्ज है वालियों की। और वाली को सतर्क ये रहना चाहिए कि अपना बेटा या बेटी की संगत कौन सी है, क्योंकि मैन ही नोज बाय द कंपनी ही कीप्स। तो जैसी संगत होगी वैसा तुम बनो। कौन सी किताब पढ़ते हो यह कहो ना तो भी चारित्र कैसा है ये मालूम हो जाता है। किसके साथ घूमते हो ये बताओ तो भी ख्याल आ जाता है। कहाँ बैठ के आप वक्त गुजारते हो यह भी महत्व। इन सब बातों का ध्यान वालियों को रखना चाहिए। और पेरेंट्स, इनके लिए एक ही रास्ता है, कांस्टेंट अवेयरनेस, अपने संतानों के प्रति जागृत रहना, बस ये। और गवर्नमेंट के लिए तो क्या है कि भाई गवर्नमेंट कोई भी हो, जगत भर के कोई भी देश की, उनका लक्ष्य एक ही होता है, लोक कल्याण। लोक कल्याण एक ही लक्ष्य है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राधान्य अगर क्या कहीं मिलता हो तो ये लोकशाही प्रथा में मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट की एक ही बात कि शक्तिशाली न्यायी होने चाहिए और निर्बल सलामत होने चाहिए। समाज व्यवस्था इन्हें इस प्रकार का आयोजन करना होगा कि जिसमें शक्तिशाली हो, वो न्यायी हो, और जो निर्बल हो, निर्धन हो, दुर्बल हो, दलित हो, समाज से तिरस्कृत किए गए हो, इन सब सलामत होने चाहिए। सर, विलेज में हमें क्या क्या फेरफार एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए? भारत जो है ना, छोटे गांव में बसता देश है। ये बड़े बड़े शहर है, उस पर से इनकी गिनती नहीं हो सकती। 7 लाख गांवों का बना हुआ हमारा देश है। और वहाँ
अभी ऐसे भी अभी तो पहुंच चुकी है, मगर हम हमारे चोटीला विस्तार के गांव अभी भी ऐसे थे थोड़े समय पहले, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बसें नहीं जाती। मैं वहाँ प्राथमिक शाला में शिक्षक था, तो मैं चल के जाता चोटीला से 6 गाँव। तो ऐसी प्राथमिक सुविधाएं जहाँ है, जहाँ मिलनी चाहिए, पहले तो हर एक गांव में एक स्कूल तो होनी ही चाहिए, और उनमें पढ़ने वाले बच्चे को फ्री एजुकेशन देना चाहिए, मुफ्त शिक्षण होना चाहिए। तो मैं सिर्फ 3 वाक्य इसमें लिखता हूँ। नो मोर देन अदर, दूसरों से ज़्यादा जानो। वर्क मोर देन अदर, दूसरों से ज़्यादा काम करो। एक्सपेक्ट लेस देन अदर, दूसरों से कम अपेक्षा रखो। विलियम शेक्सपियर, ये विलियम शेक्सपियर के 3 वाक्य है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे फ्री एजुकेशन के सोशल एक्टिविटी के टॉपिक पर आपने युवाओं का और वालियों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। Hello friends, and I'm so excited to tell about free education. Education is the most powerful weapon you can use to change the world. A story of that Anand Kumar is a lower class student who has a passion in studies and is good at it. One day, he meets Lalan Singh, who runs a coaching center. Lalan takes Anand as a teacher in his coaching center, Excellence Coaching Center. There, Anand sees the plight of a boy who had to leave due to poverty. Hence, he leaves Excellence and started a separate tuition for poor kids in which he enrolled 30 kids at a time. In course of the tuition, Anand gets immense help from his brother Pranav and his mother. Lalan and Sriram plan to have Anand killed so that his kids won't be entering IIT. Anand is hurt brutally by 2 of Lalan's henchmen and is hospitalized on the verge of death. He tells his students to then use their knowledge to defeat the goons sent by Sriram while he is being treated. The students in unity use their knowledge and defeat the goons, and Anand is treated successfully. The students take the IIT exam and all 30 students pass successfully. So that story was informed that we have to bring free education and within best quality, and expect to learn a ton of great things. Education system. Education after independence. Soon after gaining independence in 1947, making education available to all had become a priority for the government. And now, government provides free education through the Right of Children to Free and Compulsory Education Act approved in the Parliament of India on 4th of August in 2009. New Education Policy of 2020. Approved by HRD Ministry. The New Education Policy 2020 has been approved by HRD Ministry as Education Ministry. The main agenda for the need of the hour, and it will prepare the students to face the challenges of the new world. On 74th Independence Day, PM Modi stated that policy and NEP introduced with an objective to strengthen research and innovation in the country. School examination to be removed by 2021. NEP Committee. School examination may be removed by us, decided by MHRD. The step has been taken in a bid to modernize the evaluation process in school. As per the recommended evaluation process, the focus will be on class-based assessment while allowing the 5+3+3+4 structure as per an official from MHRD. What is 5+3+3+4 design?
The 5+3+3+4 design as recommended by the NEP committee in 2019 comprises of the first 5 years of foundation stage, example 3 years of the pre-primary school along with class 1 and class 2nd, followed by 3 years of preparatory stage, example class 3 to 5, then 3 years of the middle stage, classes 6 to 8, and then concluded by 4 final years of the secondary stage, example class 9 to 12. Semesterization of board examination suggestion by NEP. Under the Right to Education Act, PMHRD has also been planning to extend the age limit to attaining free education under the Right to Education Act from 14 years to 18 years. An MHRD official stated that the ministry has been working towards including early childhood as well as secondary school education within the boundaries of the RTE Act. At the same time, the government of Gujarat, Odisha and West Bengal have reinstated the pass-fail system in their schools. NEP suggests removal of MPhil for higher education. Another proposal from the committee adds that the higher education institute must be established through under a higher education institute charter under NHERA, thus reducing the rate of the parliament and the state legislature. The higher education institute that have been sent secretly must have received accreditation within the first 5 years of being set up as per the NHERA regulation. Aim of new education policy. By 2030, one large multidisciplinary colleges in every district and at least have an enrollment of 3,000 students. Aim is that the ratio in higher education, 263% in 2018, must reduce to 50% by 2035 vocational education. Music, arts and literature to be taught in all colleges. Sanskrit will be mainstreamed in higher education. No rigid separation between science, arts and commerce. Practical changes. Student will be taught coding from class 6. Internship will be included from class 6. Academic bank of credit to be established and legal and the 4th year course also lead to degree with research. Multiple entry and exit system in the academic bank of credits in higher education sector. Top 100 foreign colleges can set up their campuses in India. Foreign admissions. The National Testing Agency (NTA) will conduct a common entrance examination (CEE) for admissions to universities across the country. Conclusion. The 12+2 system will be divided into 5+3+3+4 format. The new education system has expanded the age group 6 to 14 years of mandatory schooling to 3 to 18 years of schooling. There will be no hard separation, which means students from class 9 to 12 can choose the subject they are willingly to pursue. Sports has been added in vocational subjects. Wherever possible, the medium of language is preferable to be in home language, mother language or the regional language until at least grade 5, but preferable till grade 8 and beyond that also. This will be followed in public as well as private schools. Some much needed questions or changes. Adequate attention should be paid to the education of children who have been employed at school age. If 70% of children in India go to government schools, then the remaining 30% should also go to government schools. A society should have a policy that accepts all third castes. If a lot has changed in terms of education, then government also needs to make some changes which are mentioned above. શિક્ષા અંધકારને દૂર કરીને જે પ્રકાશ ફેલાવી દે અને બુઝાયેલી આશામાં જે વિશ્વાસ જગાવી દે એ છે શિક્ષા. જ્યારે લાગે અસંભવ કોઈ પણ વસ્તુ તેને સંભવ બનાવવાની રાહ જે દેખાડે એ છે શિક્ષા. સભ્યતાની સમજ ન હોનારને સભ્યતાનો પાઠ ભણાવી અને અજ્ઞાનીના મનમાં જે જ્ઞાનનો દીવો પ્રગટાવી દે એ છે શિક્ષા. બધા જ દુઃખની દવા જે બતાવી દે અને વસ્તુની સાચી ઉપયોગિતા જે સમજાવે એ છે શિક્ષા. કઠિન રસ્તાને સરળ જે બનાવે અને વાસ્તવિકતામાં તફાવત જે બતાવે એ છે શિક્ષા. માણસાઈ અને પશુઓની વચ્ચેનું અંતર જે બતાવે એ છે શિક્ષા. શાંતિ અને ખુશીઓનો જન્મ દિવસ છે શિક્ષા. अस्पृश्यता भेदभाव અને અવિશ્વાસને દૂર બગાડવાનું મંદિર છે શિક્ષણ. જે સમાજમાં બધા જ પુરુષ અને સ્ત્રી શિક્ષિત છે, સફળતા અને સમૃદ્ધિ પોતે જ તેમના પૂજારી બન્યા છે. તો ચાલો સમગ્ર માનવ સમાજને શિક્ષિત કરીએ.
Thank you.